कहते हैं इंसान अपनी परछाई से बच सकता है, अपने अतीत से नहीं। अपने कर्मों से बच सकता है, अपने भाग्य से नहीं। अनहोनी से बच सकता है, होनी से नहीं। होनी को ना आप टाल सकते हैं, ना मैं। हाँ, ये और बात है कि जिंदगी के इस चक्र को समझने के लिए मुझे बातों की गहराइयों तक जाना पड़ा है। बहुत बरसों पहले की बात है। देवदासियां मंदिरों में नृत्य करके देवताओं को खुश किया करती थी, और इसी वजह से भरतनाट्यम आज तक जिंदा है। शायद आप इस बात को अब तक ना मानते हो, पर मैं मान चुका हूं। My eyes close. I breathe. I know that I am beginning. I forget my days. The agony intense. The joy overpowering. All I have is me. I speak fluently. My articulation impeccable. I design my limbs. They carry a story, intense. I don't speak anymore. They speak themselves. I have always dreamt of doing my Arangetram and finally have achieved this dream. People see Bharatanatyam as ancient, but I see it as a language. Arangetram is basically a debut performance which a dancer performs before the audience, and then she begins her journey in dance. एक वो मेरा सपना था सिंस मैनी ईयर्स, बचपन से, कि मुझे ये एक दिन ऐसा मेरा लाइफ में दिन आएगा जिस दिन आई विल परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, और मेरा अरंगेत्रम मैं कंप्लीट करूँगी इन भरतनाट्यम. So Bharatanatyam, it's developed from this word Bharata, which means Bhava, Raga and Tala. It's a combination of these three words, and that's how Bharatanatyam is made. And actually Bharatanatyam का history अगर हम देखें तो it goes back to Devdasi tradition, where Devdasis used to perform this dance form in temples, and वो actually भगवान के लिए perform करते थे. सब जो मंदिर का काम है वो करते थे, and basically they were devoted to God. So ऐसे इसका हिस्ट्री आया, एंड देन धीरे धीरे इट टर्न्ड इनटू अ डांस फॉर्म, एंड इट्स अमंग्स्ट द 8 इंडियन क्लासिकल डांस फॉर्म्स. So in Bharatanatyam we have few aspects. We have makeup, which is a very important aspect for a dancer, where she does a very bold makeup in order to show her expressions to the audience. Makeup जो होता है वो बहुत elaborate किया जाता है, where your eyes are made big through the eyeliner, then loud makeup is done. Then there are navras.
जो 9 types of different emotions or expressions that a dancer portrays. जैसे we have Shringara where she is dressing up, decorating herself. हास्य जिसमें she is laughing. रौद्र जिसमें anger is shown. वीर जिसमें bravery is shown. Karuna sadness. Adbhuta where surprise is shown. Bibhatsa where disgust is shown. Shanta where a very meditative Shant ras is shown. So these are the various Navrasas which are shown. Ghungroos play a very important role in a dancer's life where without ghungroos I don't think it's possible to dance. Then we talk about the instruments which are very important. Without the musical instruments, it's not possible to perform. There are musicians for accompanying the dancer, and there are instruments like mridangam, flute, वायलिन, सितार है, ऐसे बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं. एंड भरतनाट्यम वी एक्चुअली फॉलो द कर्नाटिक म्यूजिक वेयर ऑल दीज इंस्ट्रूमेंट्स come under that. त्रिपताक कर्तरीमुख मयूराख्य अर्धचन्द्रस्य अराल शुकटुण्डकः मुष्टिश्च शिखराख्यश्च कपित कटकामुख सूची चंद्र. So भरतनाट्यम में बहुत से माइथोलॉजिकल स्टोरीज कन्वे होते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक आइटम लूँ जो है शब्दम. शब्दम इज़ एक्चुअली अभिनय पीस जिसमें हम कृष्णा के स्टोरीज, कृष्णा लीलाज ये सब बताते हैं. जिसमें फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ऐसा किया तो इट शोज कृष्णा. दिस इज़ अ मुद्रा यूज फॉर कृष्णा. गोपीज who are sitting on the bank of river and वो कृष्णा को spot करते हैं. कृष्णा ने अगर उनके clothes steal किए from the bank of the river तो then they go like this and they like please give back my clothes and then no please give me. ऐसे way में हम convey होते हैं. सो गुरु शिष्य परंपरा है समथिंग जो हमारे इंस्टीट्यूट में बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं, जहाँ पर गुरु अपने शिष्य को जो भी उनका नॉलेज है वो ट्रांसफ़र करता है एंड इट कीप्स गोइंग ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. जो मेरे गुरु है डॉक्टर संध्या पुरेचा जी. She is the chairman of Sangeet Natak Academy and she is my guru and has been teaching me since the last 15 years. मुझे उनसे बहुत सीखने को मिला है, चाहे वो पेशेंस हो, चाहे उनके वजह से जो मेरी बॉडी में ग्रेस आया है. उन्होंने बचपन से हमें बहुत डांटा है बट उसके वजह से जो डिसिप्लिन हमारे बॉडी में आया है दैट इज़ अनबीटेबल एंड आई एम रियली थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू हर फॉर एवरीथिंग दैट शी हैज़ डन फॉर मी सिंस चाइल्डहुड. गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दिखाए. बिना गुरु के ज्ञान मिलता नहीं है. मैं श्रीमती राधिका मधुसूदन उमर जी. शादी से पहले मैं विद्या तिरुपति गुड़ी. मेरी जन्मभूमि और कर्मभूमि गुजरात है पर ओरिजिनली मैं नॉर्थ कर्नाटका बेलगाम की हूँ. और बचपन से मुझे डांसिंग का बहुत शौक था. इसका बेनिफिट है तो मैं ये बोलूँगी कि भरतनाट्यम करने से हम हमारी भारतीय संस्कृति का संरक्षण कर रहे हैं. आज हर बच्चा वेस्टर्नाइजेशन के इसके ऊपर वेस्टर्न डांसेस के करते हैं पर भरतनाट्यम सीखने से करने से अपनी भारतीय संस्कृति की धरोहर हम संभाल रहे हैं और आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन को भी ये सिखा पाएंगे तो हम भारतीय संस्कृति को आगे ले जा सकते हैं. स्टोरी टेलिंग यानी ऐसे ये भरतनाट्यम सोलो परफॉर्मेंस है पर जब स्टोरी टेलिंग करना हो, जैसे आज राम सीता स्वयंवर दिखाना हो तो पहले जनक भी खुद भी बनते हैं, उसमें से बाद में टर्न होके वो सीता बनते हैं, बाद में राम और लक्ष्मण आते हैं. ऑडियंस को ऐसे ही लगता है कि दोनों खड़े हैं. ऐसा नहीं है कि ऑडियंस वो फील कर सकती है. वही अभिनय अभी प्लस नी यानी की और ले जाना, मतलब कोई भी स्टोरी तो इसमें अब
वही राम और सीता का स्वयंवर हो रहा है, तो जो अभिनय के थ्रू उसको दिखाना है, तो वो स्टोरी की तरफ ले जाना, उसको अभिनय कहते हैं। अपना भरतनाट्यम का सबसे वेस्टर्न डांसेस से इधर वो डिफर होता है। गुरु शिष्य रिलेशनशिप, पता ही होगा, स्टूडेंट आते हैं, बहुत छोटे होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है, उनको मुझे मोल्ड करना होता है कि उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ता है। कभी कभी बच्चे थक जाते हैं, नहीं करते, प्यार से उनको करवाती हूँ। ज़्यादातर भरतनाट्यम लड़कियाँ ही सीखती हैं, लड़के थोड़ा कम सीखते हैं। 2-3 रीज़न है। सीखना तो चाहिए सबको, पर लड़कों को वैसे गुरु भी मिल जाए, क्योंकि जो गुरु होते हैं वो फीमेल होने से वो सिखाते वक्त उनके अंदर फेमिनाइन जेस्चर्स उनके हो जाते हैं। दूसरा, लड़कियां आगे जाके कभी कभी इसको करियर के इसमें लेती है, तो मतलब जो अर्निंग्स होती है वो इसके अंदर बहुत कम है, तो वो करियर के इसमें चूज नहीं कर सकते, इसलिए भी वो लोग हेजिटेट होते हैं। बैले करके जो फॉरेन का नृत्य प्रकार है, जो टोज पे किया जाता है, थंब पे ही इस पे किया जाता है, उसके वो थोड़ा बहुत मतलब अपनी जो भरतनाट्यम की नृत्य नाटिका होती है उसको थोड़ी सिमिलर है। जैसे उसके अंदर भी स्टोरीज होती है और वो लोग भी अपने थोड़े एक्सप्रेशंस दिखा के उस स्टोरी को बताते हैं। आना पावलोवा और वो सब लोग वहाँ से यहाँ भरतनाट्यम सीखने आए थे। एक्चुअली रुक्ष्मणी देवी वहाँ पे सीखने गए थे, पर आना पावलोवा ने बोला कि आपका भरतनाट्यम ही इतना, इंडियन कल्चर बहुत अच्छा है, आप वहीं पे सीखो। और फिर वो लोग भी इधर आके भरतनाट्यम सीखने आए थे वो लोग। मैं ऐसा चाहूँगी कि जो अपना ट्रेडिशनल है वो ट्रेडिशनली ही रहना चाहिए। वो कंटेम्प्रेरी चेंज करो, पर फिर भी जब पहले सीखो तब ट्रेडिशनल ही सीखा हुआ होता है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। फ्यूजन भी करते हैं तो भी पहले जो अपने में बोलते हैं ना कि मार्गम, पूरा 10 डांस का जो मार्गम है वो एटलीस्ट ट्रेडिशनली सीखा हुआ हो, और फिर फ्यूजन आप स्टेज पे करो, वो ठीक रहता है। पर नहीं, चेंज मिनिमम करे वो बेस्ट रहेगा, तो ही इंडियन कल्चर वहाँ तक पहुँचेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। Devdasi is a very, very pious, beautiful, self-made woman, and she chose to perform for the Lord, and that's her choice. So my name is Hari Krishna Kalyanasundaram, and I'm proudly the 7th generation of a lineage that traces its roots back to Tanjore. We have been teaching and propagating Bharatanatyam since 1710, teaching dance since 1992. I debuted as a child prodigy in 1986. This was done in the 70s outside the Opera House in Sydney. Here you can go where the New Zealand Prime Minister Walter Nash had come to Rashtrapati Bhavan in Mumbai, and Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister, the then Prime Minister, was here, and we presented a collage of dances and collaborated with other dance forms, as you can see.
So that has been our what we would call as a mission as well, to take everyone along and yet have our own space in this vast space where there is space for everyone and their ideas. The question to the history of Bharatanatyam: how far ago did it actually originate? Where and when did this happen? This has a close tie with thoughts of a human settlement. If we can take our mind way back into many, many thousands of years, please do not conform to yet another white lie that everything has to originate in and on the birth of Christ, if I might be forgiven for that. So there are political reasons. So just break free from that. Everything is 300 BCE. First AD. I say nahi. If I can switch to Hindi, when we go on the study of language, man, that is I, to you, to ya aap, to hum, in the line of language being developed, it took 7,000 years to go do an anthropological study. Now, if you come to Bharatanatyam, where the gesture languages are conveying a given meaning, that means your and my heritage is way beyond anybody's imagination. So, but we had to reconcile to a white lie saying that it is 3,000 years, wherein I am saying it is more than 11,000 years plus with evidence. Thus, I would like you, many influences will speak from different directions to us. It depends on us to allow the influence inside us. Why are people moving more towards appealing topics? It can be Western, it can be anything. There are many touch points which makes an artist think, if I do this, I might get 300 more people. If I do that, I might get my tickets to sell. If I do this, if I'm allowed to say bums and seats and certain other things. It actually boils down, I think, what they at that particular juncture want to share. But how does it impact an art? Down to that, there has to be, I think, a responsibility that and using this idiom, just like this English language, and if I am able to add to its vocabulary, add to its beauty, then as an artist, I'm presenting that language, whether it's an art form or Bharatanatyam, correctly. Now that is an individual call. Possibly they try to add elements. It can be Western elements to reach out to a given audience. It can be other instruments that they add to think like it looks fancy. In the final arriving point, are we keeping the art form and the practice of the art form, and are we true to that, is a question, and I'll leave it in that. My eyes close. I breathe. I know that I am beginning. I forget my days. The agony intense. The joy overpowering. All I have is me. I speak fluently. My articulation impeccable. They carry a story, intense. I don't speak anymore.
they speak themselves.